you start your preparation for IAS prelims exam? If someone is starting with the beginning, I think he should start from the ideal time is when is the final year of graduation, because in final year pressure of this syllabus and also study is very less. So I think that is a very ideal thing to start. And prelims is very much knowledge oriented, so you have to be very conceptual towards the subject also, and also very much aware of the current happenings. For this, anyone who is preparing for this examination must go through the basic books, at least with the NCERT, and so that after just completing the graduation, he must be aware of the basic knowledge of the current affairs, history, geography, or economy, or polity, whatever the things are there. And then after, he can switch over the higher things. So there will be 6 to 9 months of time he will be getting. So he can have a better knowledge of the prelims examination. So he can very easily go through the process. What do you think about the evolving trends in IAS prelims exam these days? Like this year's prelims exam was more factual. I think every year there is a mix of both factual questions and also the conceptual question. So you have to be ready for both the things. See, what mistakes students do that when one year there is, suppose last year maximum question from current affairs. So this year I saw that many students have started to download the questions or the materials from the website which are current oriented and started to mug up those things. And in this process they forgot to revise the basic questions or the basic materials about which they started. And this year what UPSC did, they gave more questions from the conceptual part and lesser questions from the current part. So those who have not balanced between these two things, I think they are getting lesser marks, and those who have balanced it, they are getting the better mark. तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए क्या है, आपको बेसिक की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स जो है अपडेट रखना होगा. अब मुझे लगता है करंट अफेयर्स के आपको बहुत काम करने की ज़रूरत नहीं है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है. जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स एंड ऑल्सो इन द मेंस, बिकॉज इन मेंस there are 4 GS papers. Okay, so I will go on that topic later on, but the point is that unless you are not doing newspaper, you are not able to do good in the mains examination. So for currents, read newspaper as much as you can possible. So it's essential for prelims and mains. Essential, very much essential. It is the indispensable thing for any civil servant who is preparing for the civil service examination. Okay. So what was your strategy for IAS prelims as a whole? For me, there is a 2-stage process. First of all, read the basic books, like for history, read NCERT from 6 to 12, in the same manner for geography, polity, economy, and for environment. See, and from last 2-3 years, there are more questions from environment and science and tech parts. For this, you have to be very much aware about the basic concept, those things, and build those things, improve upon those things with the current affairs. So read those things, and second, make the notes of the current affairs, because current affairs is very much bulky things. Unless you are not making a notes of very condensed form, you will not able to revise those things during the examination process, like when the examination is 15 days away. So these two process I think very important. And second is that practice, because many questions are lakhs of question can be made from any topic. So when you are practicing the questions, then you are revising the concept, because when you are doing the wrong, तो आप पता चलता है कि आपने गलती क्यों की, and revisit after the practice, so that आपको पता चल जाए कि गलती मैंने ये की थी. नेक्स्ट टाइम अगर उस एरिया से क्वेश्चन है, you will not be confusing with the same thing. तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ करनी चाहिए, आपको पढ़ना है, सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. और मुझे लगता है कि प्रीलिम्स से अगर 2 महीने पहले अगर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए करना, मुझे लगता है ही विल गेट थ्रू द प्रीलिम्स एग्जाम वेरी इजीली. How did you maintain a balance between different subjects like polity, history, geography? All subjects are important, because UPSC at some times asks number of questions from one subject and lesser questions from other subject. For example, last year number of political questions were very less, but this year it was around 25 or 30 questions. So you have no luxury to leave one subject and prepare other subject. So आपको टाइम बराबर रखना होगा. हाँ, इंटरेस्ट की बात हो सकती है, किसी का पॉलिटी में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट होगा, किसी की ज्योग्राफी में होगा,
तो आपको जो है अपने चॉइस के हिसाब, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे कि मैं क्या करता था कि एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ता था कि एक मोनोटोनी नहीं है। पता क्या है, मोनोटोनस होने से आपको इंटरेस्ट भी नहीं आता है, यू आर नॉट एबल टू ग्रैस्प द थिंग्स। तो आप 2-3 सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ो और टारगेट बनाओ कि मुझे एक वीक में या 15 दिन में मुझे ये चैप्टर्स या ये टॉपिक्स का कंप्लीट करना है। तो उससे क्या होगा कि आप जो है चीज़ों को फ्रिक्वेंटली रिवाइज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके से करने से आपको एक बेटर चांस होगा प्रीलिम्स के लिए। Any advice on how to attempt the prelims question paper? Yeah, this is very much relevant question. See, what happens for any student who is preparing for this, he must be knowing all the questions. At least 90 questions he must be knowing if someone is giving serious prelims examination. So the point is, after 40 or 45 questions, 40 questions you can solve easily. But after 45, there is something doubtful question. Like you can eliminate 2 options, but in 2 options you will be very much doubtful which is correct, which is wrong. But this can be done away with when you practice the prelims question before the prelims examination. तो उसमें क्या होगा, आपको एजुकेटेड गेस मारना होता है, ठीक है कि तो आपने अगर प्रैक्टिस पहले की हुई है तो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस वेरी इजीली। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है कि आप पहले 1 to 100 सारे क्वेश्चंस करें जो आप 100% आते हैं, ठीक है, उसको फिर मार्क कर लें आप ओमार पे, बिकॉज एग्जामिनर इज नॉट और इन्विजिलेटर इज नॉट गोइंग टू गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर द मार्किंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं कि 100 क्वेश्चन कर लिए और उनके पास सर्किल करने के लिए टाइम नहीं बचा, तो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा टाइम। तो आपको क्या करना है, 100 तक करना है, जो कर लिया आपने मार्क कर लीजिए, उसके बाद फिर से फर्स्ट से जाए और जो भी आपको लगता है कि डाउटफुल है उस पर टाइम दें और उसको सॉल्व करें। तो मुझे लगता है एलिमिनेशन टेक्निक इज़ अ गुड टेक्निक, और ये आपका बेटर तभी होगा जब आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, वरना यहाँ पे क्या होगा, 2 में आप तुक्का लगाए, गलत होगा सही होगा। तो आप पहले अगर प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बेटर पोजिशन टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। Any suggestion that you would like to give for future candidates who are going to appear in IAS prelims next year? Right now, if someone is preparing for the next year, I think start with the basics. First, read the NCERT of all the subjects which are in the syllabus. First of all, download the syllabus from the UPSC website and purchase the basic books. Go through it 1, 2, 3 times. At least you should be well versed with what geography is, what history is, what Indian history, what is polity. Because these are the new subjects for the students who are coming into this field. Because if I am an electrical engineering, I hardly, before starting this process, must knowing that what president do or what prime minister do. ठीक है, तो ये तभी होगा जब आपको अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे होंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि 1-2 अच्छी बुक्स पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर हिस्ट्री यू हैव टू रीड बिपिन चंद्रा, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और यू कैन स्टडी सुमित सरकार और बंदर चट्टोपाध्याय देयर बुक, एंड ऑल्सो फॉर ज्योग्राफी यू कैन रीड GC Leong. See, you have to build your knowledge base on those basic concepts. Foundation should be strong. Because many students, what do they go away with the syllabus? What इतना सारा पढ़ना है, आप पढ़ने के लिए आए तो आप पढ़ो, ठीक है, एटलीस्ट 6 ईयर आप दो बेसिक पढ़ने में, एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है आप उसको बिल्डअप करो। उसके बाद आप करेंट अफेयर्स अभी से पढ़ो, न्यूज़पेपर आप अभी से पढ़ो तब तक के लिए, और एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप कटिंग रख सकते हो तो कटिंग रखो, अदरवाइज आप नोट्स, हार्ड नोट्स बनाएं, फिर बाद में लास्ट के 3 मंथ्स में आप प्रैक्टिस करें। आई थिंक अगर कोई स्टूडेंट्स ये 3 चीज़ कर रहा है, ही विल गेट थ्रू द प्रीलिम्स। Thank you.